Hello everyone, welcome you all at India's largest online learning platform. Let's start with a brief introduction about myself. My name is Ravi Yadav and I have 8 years of teaching experience in the field of GATE and Engineering Services examination. I've qualified GATE 5 times and I've also qualified State Engineering Services examination of Uttar Pradesh and some Maharatna PSUs as well like NTPC, SAIL, PHC, and some other places. First of all, you all need to download Unacademy learning app. First of all, you all need to download Unacademy learning app and get your subscription. And after getting your subscription, you will get daily live classes, live tests and quizzes, structured courses, and unlimited access. Now, now आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है मीन्स लाइव क्लासेस भी मिलती है साथ ही आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी अवेलेबल कराया जाता है ओके तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं लाइव भी देख सकते हैं लेकिन लाइव क्लासेस अटेंड करने का लाइव क्लासेस ज्वाइन करने का बेनिफिट ये है कि आप अपने एजुकेटर से जो भी आपका डाउट है उसको पूछ सकते हैं उसको क्लियर कर सकते हैं इन द क्लास इटसेल्फ दैट विल बी अ फुल इंटरैक्टिव क्लास where you can interact with your educator that you can ask your doubts participate in the polls and quizzes as well apart from this you will also get live test and quizzes to evaluate yourself it is the best way right is to get best way is to right to participate in the polls quizzes right mock test में आप participate करते हैं अपनी preparation को evaluate करके that you will get after getting subscription on structured courses means whether you are preparing for GATE or engineering service examination कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हो जो कोर्सेज हैं अनअकैडमी के वो आपके एग्जामिनेशन के सिलेबस एंड पैटर्न के अकॉर्डिंग डिजाइन किए गए हैं you will get chance to learn with other top educators across India and the courses at Unacademy for GATE and engineering services engineering GATE and engineering services examination throughout the year the number of courses चलते हैं अलग-अलग number of courses for different branches like there are 24 courses running for mechanical engineering you can join any batch right and avail the benefits now there are two kinds of subscription that are available one is the plus other is the iconic now for the plus subscription you will get India's best educator active live classes structured course and PDF live test okay for iconic subscription आपको ये सारी चीजें तो मिलती ही हैं India's best educator interactive live classes structured courses and PDFs and live test है जो भी कोर्स आप पढ़ते हैं उसका PDF फॉर्मेट में भी आपको अवेलेबल कराया जाता है apart from this you will get a personal coach in iconic subscription what is the best about iconic subscription is you will get a personal coach right personal guidance one-to-one discussion that you can have one-to-one discussion about your doubts about your strategy जो भी आपके मन में डाउट्स हैं एग्जामिनेशन को लेके स्ट्रेटजी को लेके टाइम प्लानिंग को लेके all this you can discuss with your personal coach you will also get personalized test analysis study planner study material all these things you will get at Unacademy आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बाद और जो प्लस सब्सक्रिप्शन है आपका राइट जो आपका प्लस सब्सक्रिप्शन है फॉर 24 months the fee is 44,000 right the fee is 44,000 rupees but if you are using this code Ravi PY this is your referral code this is a referral code if you are using this referral code then you will get 10% discount and ultimately you have to pay for 24 months you have to pay 39,600 rupees only okay that is for 24 months that is 2 years okay जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं आपको हर एक सब्सक्रिप्शन पे अगर ये रेफरल कोड यूज किया अपने रवि पीवाई यू विल गेट 10% now iconic subscription there are two courses available 1 year and 2 year for 2 year the fee is 74,000 for 1 year the fee is 50,250 rupees only but if you use this code Ravi PY right if you are using this code Ravi PY you will be getting 10% discount and ultimately you have to pay 66,600 rupees only for 24 months and 45,225 rupees only for 12 months.
Okay, so I hope you got all these points and you will get your subscription as soon as possible. आप प्लस और आइकॉनिक दोनों में से कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लेकिन जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है दैट इज बेस्ट फॉर यू बिकॉज हियर you will get uh, like a personal coach, personal guidance, personal assistance that will help you in securing better rank. That will help you in securing better rank, right? Here, not just selection, we are also talking about the rank. Rank you should get better. Okay. So I hope you got the point. Let's start with the today's. Okay. We are discussing thermodynamics revision through problems. Right. In this series, what we are doing is we are discussing the concepts. Then we are discussing some formulas of this topic wise, topic wise. We are discussing topic wise concepts and फार्मूले के साथ हम उसका एजम्पन्स उस फार्मूले के पीछे कोई एजम्पशन है हम उसको भी डिस्कस कर रहे हैं रिवाइज कर रहे हैं एंड वैलिडिटी आल्सो and some practice problems. What is the purpose of practice problems in revision? Like practice problems also to refresh. Purpose of this is to refresh problem solving approach. Problem solving approach. Because ultimately your gate examination is a numerical examination and numerical based mostly numerical based examination. Right? तो आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है वो रिफ्रेश होनी चाहिए अलग अलग टॉपिक में किस टाइप की प्रॉब्लम में किस तरह से आप प्रोसीड करते हैं और दिस थिंग्स शुड बी रिफ्रेश्ड इन योर माइंड ताकि आपको एग्जामिनेशन में ज्यादा सोचना ना पड़े यू डायरेक्टली अटैक द क्वेश्चन एंड फाइंड योर एंड फाइंड योर so let's start हम we have already discussed topics like basic concept work transfer heat transfer first law statistical energy equation and then second law of thermodynamics. Today we are going to start entropy. Today we are going to start discussion on entropy, right? Quick intro formula है जो concept है उसका quick revision. Okay, today we are going to start entropy. Now what is entropy? Before that we will start with the Clausius inequality. Let us first discuss what is Clausius inequality. Clausius inequality. Let us first discuss Clausius inequality. What is Clausius inequality? That is cyclic integral of term del q by t should be less than or equal to cyclic integral of the term less than del q by t should be less than or equal to 0. Okay, cyclic integral of this term should be less than or equal to. So this is called. This means cyclic integral means for a cycle, right? For a cycle, we are discussing about it. This is our Clausius. This is also Clausius inequality. Now del q by t for a process it is equal to 0, right? For cycle is reversible. Cycle is reversible. If you are getting del q by t less than 0, that means cycle is irreversible. You will be getting cycle is irreversible. Now that is heat transfer by temperature. अलग अलग प्रोसेस के लिए प्रोसेस 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एक साइक्लिक प्रोसेस 4 to 1. अगर आपने ये लिखा दैट मीन्स साइकिल इज दिस इज इम्पॉसिबल. ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि जो भी प्रोसेस है तो रिवर्सिबल होगा या तो इरिवर्सिबल होगा. रिवर्सिबल के लिए इक्वल टू 0 और इरिवर्सिबल के लिए लेस देन. तो दिस इज कॉल्ड क्लॉसियस इनइक्वालिटी. इसी क्लॉसियस इनइक्वालिटी को यूज करके हम फाइंड करते हैं आवर कंसेप्ट ऑफ राइट.
we find our concept of entropy and we say that ds greater than or equal to del q by. So this is ds is change in entropy. And we are always interested in, we are always interested in change in entropy. We are never interested in absolute entropy. We are always interested in change in entropy. Right? We are always interested in change in entropy rather than actual entropy. Right? Absolute entropy हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं, हमारा जो इंटरेस्ट है that is in the change in entropy. Now greater than equal to साइन लिखा हमने, that is ds is equal to del q by t for, that means for reversible process, for reversible process. Right, that is for reversible process. This is for reversible process. Now ds equals to greater than greater than del q by t for irreversible. यही पे एक समझने की चीज है that we will discuss for irreversible. For irreversible. इसके अलावा जो एक दो चीजें और जो एंट्रोपी के बारे में, that is entropy is measure of, entropy is measure of molecular randomness. Molecular randomness is measure of molecular randomness and entropy is a property. ये सारा डिस्कशन मैं डिटेल में किया था, आज मैंने बस आपको एक रिवीजन दे रहा हूँ ताकि ये चीजें आपको ध्यान दें. एंट्रोपी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. राइट, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लास. इज एन एक्सटेंसिव, एंट्रोपी इज एक्सटेंसिव. एंट्रोपी इज मेजर ऑफ मॉलिक्यूलर रैंडमनेस एंड एंट्रोपी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. नाउ जो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन क्रिएट होता है वो ये है, अगर एंट्रोपी प्रॉपर्टी है, इफ एंट्रोपी इज द प्रॉपर्टी, बिगेस्ट क्वेश्चन इज इफ एंट्रोपी इज द प्रॉपर्टी, दैट मीन्स हमने पढ़ा था कि जो एंट्रोपी होती है, द एंट्रोपी डिपेंड्स ओनली ऑन द, एंट्रोपी डिपेंड्स ओनली ऑन द एंड पॉइंट्स. राइट, एंट्रोपी डिपेंड्स ओनली ऑन द एंड पॉइंट्स. राइट, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती है. जो प्रोसेस है, जो पाथ है, वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. जो एंट्रोपी है, कोई भी प्रॉपर्टी, नॉट जस्ट एंट्रोपी, प्रॉपर्टी इज अ पॉइंट फंक्शन. राइट, दिस इज पॉइंट वन, दिस इज पॉइंट टू. अगर हमने कोई डायग्राम ले लिया तो यहाँ पे जो एंट्रोपी है दैट इज S1, हियर द एंट्रोपी इज S2. अब आप 1 से 2 तक गए through process A and this path A is irreversible. This path A is irreversible. Path A is irreversible. Now there is another path B. This path B is reversible. This path B is reversible. Now path A and path B, okay, the path A and path B दोनों के लिए जो ds है, चेंज इन एंट्रोपी है A, and that is S2 minus S1, and that is equals to change in entropy through path. Right, that should be true क्योंकि जो आपकी एंट्रोपी है, एंट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी एंड दैट शुड डिपेंड ऑन द एंड पॉइंट्स ओनली. दैट शुड डिपेंड ऑन द एंड पॉइंट्स ओनली. राइट, नॉट ऑन द पाथ. तो आपका रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, दोनों के लिए एंट्रोपी चेंज सेम होनी चाहिए. देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज टू? रिवर्सिबल के लिए del q by t लिख दिया आपने. ds इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी del q by t से ज्यादा. फिर ये दोनों अलग क्यों? राइट, दिस इज द रियल क्वेश्चन, व्हाई एंट्रोपी चेंज हियर. तो हमने डेफिनेशन में लिखा है, बाय डेफिनेशन दिस इज कॉल्ड सेकंड. ऑलराइट, लेट्स जस्ट wait. ds is right del q by t for reversible process, ds is greater than del q by t for irreversible process.
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया कि अगर एंट्रोपी प्रॉपर्टी है तो पाथ ए और पाथ बी दोनों के लिए सेम होना चाहिए, चाहे वो रिवर्सिबल है या फिर इरिवर्सिबल। फिर यहाँ पे सेम क्यों नहीं है इन दोनों केसेस में, ये सेम क्यों नहीं है? डीएस इक्वल टू डेल क्यू बाई टी है रिवर्सिबल के लिए, एंड डीएस इज ग्रेटर देन डेल क्यू बाई टी है इरिवर्सिबल, राइट? ये सिर्फ इसलिए है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है, ये जो क्वांटिटी है डेल क्यू बाई टी, दिस इज नॉट चेंजिंग एंट्रोपी। डेल क्यू जब से आपका किसी पाथ से आप गए, सपोज एंट्रोपी टेंस 3 है, तो ए से गए तभी 3 आएगा, बी से गए तभी 3 आएगा, ओके? लेकिन अगर आप ए से गए तो डेल क्यू बाई टी अलग आएगा, अगर आप पाथ बी से गए तो डेल क्यू बाई टी डिफरेंट हो, डेल क्यू बाई टी डिफरेंट हो सकता है, डेल क्यू बाई टी डिफरेंट हो सकता है। डेल क्यू बाई टी इसका सिर्फ मतलब इतना है कि डेल क्यू बाई टी अगर आप पाथ बी से गए तो 3 है, डेल क्यू बाई टी अगर आप पाथ ए से गए ये लेस देन टी हो, क्योंकि एंट्रोपी तो ही दिस इज डीएस, एंट्रोपी चेंज तो दोनों केस में सेम होगा, लेकिन क्वांटिटी डेल क्यू बाई टी इज नॉट एंट्रोपी चेंज। डेल क्यू बाई टी represents entropy, del Q by T represents entropy change only for reversible. Del Q by T represents entropy change only for reversible process. Okay. So this is called second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics for तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। ये जो दोनों स्टेटमेंट्स लिखे गए थे डेल क्यू बाई टी, ये दोनों स्टेटमेंट्स लिखे गए स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। ये दोनों स्टेटमेंट का क्या मतलब है? अगर एंट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी दैट मींस एंट्रोपी शुड बी सेम फॉर बोथ प्रोसेस रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल बोथ प्रोसेसेस। एक एंट्रोपी तो सेम है, अभी भी एंट्रोपी सेम ही है, S2 माइनस S1 3 है। तो यहाँ से एक चीज क्लियर होगी कि एंट्रोपी तो सेम होगी। वाई? क्योंकि एंट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी एंड दैट विल ऑलवेज रिमेन इररिस्पेक्टिव ऑफ पाथ फॉलो। आप करेंगे क्या? इस चैप्टर में, इस टॉपिक में जो भी हम फॉर्मूले पढ़ेंगे वो सारे के सारे फॉर्मूले आपके जो भी फॉर्मूला पढ़ेंगे वो सारे के सारे फॉर्मूले दैट विल बी फॉर दैट विल बी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। बट अगर हमें इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं चाहिए, सपोज कि हमारा जो एक्चुअल प्रोसेस है वो पाथ ए से है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, लेकिन हमें 1 to 2 के बीच में एंट्रोपी चेंज चाहिए, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में कोई रिवर्सिबल प्रोसेस लगा हुआ है, राइट? उस रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम एंट्रोपी चेंज फाइंड करेंगे लाइक डी एस बी, और वो डी एस बी होगा वही डी एस ए होगा, बिकॉज एंट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी, ओके? तो सिंपली आपने एक इरिवर्सिबल प्रोसेस को सेम एंड पॉइंट्स के बीच में, सेम एंड पॉइंट्स के बीच में किसी रिवर्सिबल प्रोसेस से रिप्लेस कर दिया एंड यू विल फाइंड योर एंट्रोपी, ओके? तो आई होप यू गॉट दिस। तो आप दोनों के लिए देखते हैं फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। Case 1, when heat is supplied. For reversible process, when heat is supplied. Heat is supplied. For reversible process, ds equals to del q by t. Process reversible है, that will be something like this. अगर आपने हीट सप्लाई किया है, del q is positive, that is our sign convention, that means ds is positive, that means ds is greater than 0, that means S2 is greater than S1. Entropy increases, that means entropy increases. Okay. Second one, when heat is rejected. Second one is when heat is rejected from the system. When heat is rejected from the system. And that means del Q is minus, del Q minus, that means ds minus, minus
ds is less than 0, that means S2 is less than S1. That means final entropy is less than initial entropy, that means entropy, right? And third one, adiabatic process. Adiabatic process. Reversible adiabatic process, of course, this is reversible. This is reversible adiabatic process. That means del Q is 0. That means ds is 0. That means S2 equals to S1. That means isentropic. Isentropic. Okay. ये हमने already discussed किया. This is isentropic process. That means entropy. That simply means entropy for a reversible process. Entropy for a reversible process may increase, decrease, or can remain constant. Right? That means entropy is constant. तो अगर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है तो जो आपकी एंट्रोपी है दैट एंट्रोपी में इंक्रीज, डिक्रीज और कैन रिमेन कांस्टेंट डिपेंडिंग अपॉन द हीट ट्रांसफर. कोई आपसे ये पूछे कि आपकी जो एंट्रोपी है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए उसका वो इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, आप सिंपल आंसर देंगे दैट एंट्रोपी may increase, may decrease or may remain constant depending on the heat transfer. Heat supplied है, heat rejected है या फिर there is no heat transfer. Okay, that you get. Discuss. Next one is for irreversible. For irreversible. For irreversible. What will happen with the irreversible process? That is, Ds is greater than del Q by T, right? And that is for irreversible. तो अगर इक्वालिटी साइन लगाएंगे हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर you have to use equality sign del Q by T, irreversible, and plus there will be a term delta S generation, entropy generation. Now this is because of external interaction. एक्सटर्नल इंटरेक्शन जो आप बाहर से हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, हीट ट्रांसफर मतलब हीट सप्लाइड या फिर हीट रिजेक्टेड, एंड दिस इज इंटरनल इरिवर्सिबल. दिस इज बिकॉज ऑफ इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी. इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी, राइट. ये जो एक्सटर्नल इंटरेक्शन है दैट में बी पॉजिटिव, दैट में बी नेगेटिव और दैट में बी जीरो, राइट. जो बाहर से हीट ट्रांसफर कर रहे हैं आप, वो हीट ट्रांसफर पॉजिटिव हो सकता है सप्लाइड टू द सिस्टम, heat transfer negative हो सकता है rejected from the system, or that can be zero, there is no heat transfer, right? That can be zero. But this delta S generation, that is internal irreversibility, and that is always positive. That is always positive. Okay, now this is always positive. This is always positive. That is always positive. That is always that is always. तो जो आपका राइट, एंड दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड depends on irreversibility of the process, irreversibility of the process. जो एंट्रोपी है वो एंट्रोपी आपकी प्रॉपर्टी थी, लेकिन सिंस एंट्रोपी जनरेशन डिपेंड्स ऑन द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी, दिस इज अ पाथ फंक्शन, इज अ पाथ फंक्शन. जितनी ज्यादा रिवर्सिबिलिटी होगी उतना ही ज्यादा आपका इंटरनल इतनी ज्यादा आपका एंट्रोपी जनरेशन होगा. दैट इज पाथ फंक्शन, दैट मीन्स नॉट प्रॉपर्टी, दिस इज नॉट property, this is not a property. Okay, so I hope you got this on this point irreversible process के लिए. लेकिन हम जो जितने भी फार्मूले हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे फार्मूले आपका
रिवर्सल प्रोसेस के लिए होगा, मैंने आपको बताया था कि एंट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी किसी दो पॉइंट के बीच में, राइट। अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल भी है, हम एज्यूम कर लेंगे कि जो प्रोसेस हो रहा है एंड पॉइंट्स ए और एंड पॉइंट्स वन और टू के बीच में, राइट। अगर इसके बीच में एक्चुअल प्रोसेस इरिवर्सिबल भी था, हम एज्यूम कर लेंगे कि इसमें एक रिवर्सिबल प्रोसेस था वन और टू के बीच में, और इस रिवर्सिबल प्रोसेस बी के लिए हम एंट्रोपी चेंज फाइंड कर लेंगे, that we will find DSB, and that DSB will be equal to DSA, like that DSB will be equal to DSA because entropy is a property. और इसके लिए जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, we have the formula, we have the uh, right methods to find entropy. इसके अलावा और बहुत सारी बातें थी कि जो हमने प्रॉपर डिस्कस किया था पहले, कि जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, always, this is always isentropic, always isentropic, right? This is always isentropic, but isentropic प्रोसेस अगर कोई आपसे कह दिया गया, isentropic प्रोसेस or may not be may not be reversible idea, reversible idea. क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख लें कि अगर सपोज कि जो एक्सटर्नल इंटरेक्शन है दैट इज नेगेटिव और ये है ऑलवेज पॉजिटिव, तो अगर ऐसा केस बना कि जो एक्सटर्नल इंटरेक्शन है, राइट, वो उसका जो नेगेटिव है दैट इज सपोज -2, एक्सटर्नल इंटरेक्शन इज -2, और जो इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, सपोज दैट इज +2 दैट इज 0, चेंज इन एंट्रोपी इस केस में 0 हो जाएगी, बट दिस प्रोसेस इज neither adiabatic nor रिवर्सिबल, राइट। ये प्रोसेस आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस था और एडियाबैटिक भी नहीं था, लेकिन क्यों? क्योंकि इंटरनल इंटरेक्शन है। सपोज हमने ले लिया ds is del q by t for irreversible process plus delta s generation, राइट। नाउ सब ये है नेगेटिव, सपोज इसको हमने ले लिया नेगेटिव क्योंकि ये एक्सटर्नल इंटरेक्शन है, ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, तो सपोज दिस इज नेगेटिव एंड दिस टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव। दो टर्म है, एक टर्म है आपका नेगेटिव, दूसरा है ऑलवेज पॉजिटिव, तो ऐसा हो सकता है कि एक केस ऐसा बने कि जितना ये नेगेटिव हो उतना ही ये पॉजिटिव हो, उस केस में ds आपका 0 हो जाएगा एट s2 इक्वल्स टू s1, इस केस में आपका s2 इक्वल्स टू s1, ओके। ये प्रोसेस एडियाबैटिक भी नहीं है क्योंकि हीट ट्रांसफर हो रहा है, हीट इज बीइंग रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव, एंड दिस इज राइट इरिवर्सिबल, तो एडियाबैटिक भी नहीं है और रिवर्सिबल भी नहीं है, लेकिन फिर भी आइसेंट्रोपिक, ये प्रोसेस फिर भी आइसेंट्रोपिक है, ये रिवर्सिबल भी नहीं है, नॉट रिवर्सिबल, नॉट एडियाबैटिक, ये रिवर्सिबल भी नहीं है, एडियाबैटिक भी नहीं है, लेकिन आइसेंट्रोपिक। तो जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक है दैट इज ऑलवेज, रिवर्सिबल एडियाबैटिक इज ऑलवेज आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक may or may not be reversible adiabatic, that you should remember, that you should that you should always। तो कुछ फार्मूले पढ़ लेते हैं आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए, सॉरी हम कुछ फार्मूले देख लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एंट्रोपी चेंज फॉर वेरियस एंट्रोपी चेंज फॉर एंट्रोपी चेंज फॉर फर्स्ट आइडियल गैस। अगर आपको आइडियल गैस गिवन है तो उसकी एंट्रोपी चेंज आप कैसे करें फॉर आइडियल, ओके। आइडियल गैस की जो एंट्रोपी चेंज का फार्मूला होता है दैट इज लेट अस फाइंड
Let us write down the formula for ideal gas, that is S2 minus S1. And that is S2 minus S1. S2 minus S1 is equal to, okay, S2 minus S1 is equal to CV ln T2 by T1, और भी चीजें मैं अभी बताऊंगा, CV ln T2 प्लस R ln T2 by V1। ये फार्मूला है, कितनी बार आपसे पूछ लिया जाता है। एक अलग फॉर्मूला लिख लेंगे, CP ln T2 by T1 माइनस R ln T2 by T1 और S2 minus S1 CV ln is CV ln V2 by V1, right? CP ln T2 by V1 plus CV ln T2 by CV ln V2 by, इन तीनों में से कोई फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपका जो प्रोसेस है, डिपेंडिंग जो आपका प्रोसेस है वो कौन सा, तो इस प्रोसेस में जो प्रॉब्लम है उसमें क्या गिवन है, टेम्परेचर वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर प्रेशर गिवन है, या फिर वॉल्यूम और प्रेशर गिवन है। सिंपल आइडियल इक्वेशन यूज कर लेंगे और कोई भी इक्वेशन आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। यू कैन फाइंड एनी इक्वेशन। सेकेंड वन इज फॉर फाइनाइट बॉडीज। सेकेंड वन इज फाइनाइट फाइनाइट बॉडी, राइट। उसके लिए जो एंट्रोपी चेंज होता है किसी फाइनाइट बॉडी के लिए, फाइनाइट बॉडी मीन्स इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, that is S2 minus S1 is MC ln F by FB, sorry, ln TF by T, right? Third one is third one is third one is for reservoir. Third one is for reservoir. Third one is for reservoir. reservoir दो टाइप के होते हैं, एक आपका सोर्स और एक सिंक। लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। वन इज द सोर्स, दिस इज सोर्स एट टेम्परेचर T1, इससे आपने हीट लिया है T1। तो जो सोर्स है, राइट, सोर्स की जो एंट्रोपी है दैट विल डिक्रीज, व्हाई, क्योंकि वहां से हीट आप ले रहे हैं, दैट विल बी माइनस Q1 बाई Q1। एक है सिंक at temperature T2, here you are supplying suppose Q, जो ds sink होगा, ये sink, and that will be Q2 by, sorry, yes, Q2 by T2, and that will be positive। पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है वैसे आपको, बट आप लिख भी सकते हैं, that will be Q2 by T2 for reservoir। इसके अलावा अगर आपका डिफ्यूजन प्रोसेस है, मिक्सिंग ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन प्रोसेस अगर आपको गिवन है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, उसके लिए जो आपका एंट्रोपी चेंज होगा, तो here S2 minus S1 equals to minus R bar N1 ln X1 plus N2 ln okay, minus R bar N1 X1 X2 are mole fraction, N1 N2 are number of moles, R is the universal, R bar is universal gas constant। आपको यहाँ से इसके अलावा एंट्रोपी चेंज फॉर यूनिवर्स, एंट्रोपी चेंज फॉर यूनिवर्स, एंट्रोपी चेंज फॉर यूनिवर्स, डीएस यूनिवर्स, तो हम ऐसे लिखते हैं डीएस सिस्टम प्लस डीएस सराउंडिंग, डीएस सिस्टम प्लस डीएस सराउंडिंग, इसको हमने ऐसे लिख दिया, डीएस सिस्टम प्लस डीएस। नाउ डीएस, अभी हमने देखा था चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है, डीएस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डेल क्यू बाई, अगर यूनिवर्स है तो यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स इज अ आइसोलेटेड सिस्टम, यूनिवर्स इज एन आइसोलेटेड सिस्टम,
that means del q equals to 0. That means del q equals 0. That means ds universe should be greater than or equal to 0. ये 0 हो जाएगा, that means greater than or equal to 0. तो ds system है plus ds surrounding, ds system plus ds surrounding, that should be equal to or this is मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं कि जो सिस्टम है ds system can be positive, can be negative और zero. सिमिलरली जो सराउंडिंग है उसकी भी एंट्रोपी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है या फिर जीरो हो सकती है, लेकिन जो कंबाइंड है दोनों का ओके जो दोनों कंबाइंड इफेक्ट है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये सिस्टम प्लस सराउंडिंग या तो जीरो होगा या फिर वो पॉजिटिव होगा. दिस यूनिवर्स इज इक्वल टू जीरो अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल दिस यूनिवर्स greater than 0 for irreversible. And this is called principle of increase of entropy. आपका जो यूनिवर्स है उसकी एंट्रोपी नेगेटिव नहीं हो सकती, उसकी एंट्रोपी डिक्रीज नहीं कर सकती. इफ एवरीथिंग इज रिवर्सिबल दैट विल बी जीरो. इफ एवरीथिंग इज जीरो ओके. और अगर रिवर्सिबल है ग्रेटर देन जीरो, अगर रिवर्सिबल है तो इक्वल टू. इसके अलावा दो टीडीएस इक्वेशन और हमने पढ़ी थी. टीडीएस इक्वेशन टेम्परेचर एंट्रोपी टीडीएस इक्वेशंस थी. दो टीडीएस इक्वेशन TdS equals to du plus TdV and again TdS equals to TH minus ओके. और जो स्लोप है कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन का, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर ऑन ts डायग्राम, राइट. T by C dt by ds, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए dt by ds for constant volume that is T by Cv and dt by ds for constant pressure that is T by Cv and T by Cp. That means since Cp is greater than Cv, जो आपका स्लोप है कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन का वो ज्यादा होगा कांस्टेंट प्रेशर लाइन. कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन एंड कांस्टेंट जो स्लोप है वो ज्यादा होगा कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन का, क्यों? क्योंकि Cv ओके. ऑल दोज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल इन द लेक्चर. जो भी हमने पढ़ा था उसमें हमने ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की थी. सिस्टम क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है. तो कभी भी जब भी हम कहते हैं कि जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज डायरेक्शनल लॉ. उससे आपको डायरेक्शन, वो डायरेक्शन आपको कहाँ से मिलेगी? जिस भी प्रॉब्लम में आपको डायरेक्शन पूछा जाए आप ये चीज यूज करें, राइट. अगर आपसे डायरेक्शन पूछी गई है किसी प्रॉब्लम में तो आप ये कंसेप्ट क्या है? इस सिस्टम की एंट्रोपी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है, जीरो. सराउंडिंग एंट्रोपी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो को जीरो हो सकती है, लेकिन दोनों की कंबाइंड दैट इज यूनिवर्स सिस्टम एंड सराउंडिंग टुगेदर की जो एंट्रोपी होगी दैट इज ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज ऑलवेज राइट पॉजिटिव या फिर इक्वल टू जीरो. दैट इज नेवर नेगेटिव. दैट एंट्रोपी चेंज कैन नेवर बी. तो अगर आपने इसको सॉल्व किया, एज्यूम कर लिया कि हमारा जो डायरेक्शन है, अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करना है, आपने एज्यूम कर लिया कि जो हमारा डायरेक्शन है वो 1 से 2 की तरफ, राइट. अब अगर ds यूनिवर्स जीरो आ गया, रिवर्सल प्रोसेस है, ऐसे करेक्ट. अगर ds यूनिवर्स नेगेटिव आ गया, सिस्टम सराउंडिंग अलग अलग है. सिस्टम की एंट्रोपी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, सराउंडिंग के नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, लेकिन यूनिवर्स की एंट्रोपी सिस्टम प्लस सराउंडिंग या तो जीरो होगी या फिर जीरो से कुछ. जीरो कब होगी? जब आपका सिस्टम जब आपका प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, राइट. और अगर नेगेटिव जीरो रिवर्सिबल होगा तो जीरो.
अगर इरिवर्सिबल है दैट इज ग्रेटर देन, इससे आप सॉल्व कर लेंगे। अगर नेगेटिव आ गया इसका मतलब कि डायरेक्शन आपका 1 से 2 ना होकर 2 से 1 की तरफ, राइट। तो डायरेक्शन आपका 1 से 2 ना होकर, सॉरी यस 1 से 2 ना होकर 2 से 1 होगी आपकी। ओके, तो ये आपका ब्रीफ में इंट्रोडक्शन था, ब्रीफ में रिवीजन था सारी चीज़ों का, राउंड में क्या होता है। लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस एंड देन एक रिवीजन कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस का, देन वी सॉल्व। So you have 2 minutes to solve this question, then I will start. An ideal gas is flowing through an insulated pipe. Pipe is insulated at the rate of 3 kg per second. There is 10% pressure drop from inlet to exit of the pipe. Inlet to the exit of the pipe. The values of R 1287 kilojoule per kg Kelvin and T naught is 300. The rate of energy loss for the pressure drop due to friction, irreversible. Okay, एक चीज रह गया तो irreversibility तो हम कल पढ़ेंगे वैसे, लेकिन अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है तो yes, दिस इज इरिवर्सिबल। फ्रिक्शन की वजह से जो इरिवर्सिबिलिटी है उसके लिए जो है प्रॉब्लम नॉट इक्वल टू पी नॉट टीएस यूनिवर्स, पी नॉट टीएस यूनिवर्स। इरिवर्सिबिलिटी की वजह से जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से इरिवर्सिबिलिटी आएगा, और इरिवर्सिबिलिटी की वजह से जो एनर्जी लॉस है वो आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल हमें फाइंड करना है टीएस यूनिवर्स। व्हाट इज टीएस यूनिवर्स? व्हाट इज टीएस यूनिवर्स? टीएस सिस्टम प्लस टीएस, टीएस सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों, बट टीएस सराउंडिंग कैसे? टीएस सराउंडिंग इज जीरो। व्हाई? क्योंकि आपसे कहा गया द पाइप इज इंसुलेटेड। अगर पाइप इंसुलेटेड है इसका मतलब आप सराउंडिंग कोई हीट ट्रांसफर नहीं है, कोई हीट ट्रांसफर नहीं है तो आपका सराउंडिंग एंड और दिस इज पाइप इज इंसुलेटेड। ओके, नाउ द डीएस यूनिवर्स है दैट इज डीएस सिस्टम, एंड व्हाट इज डीएस सिस्टम इज माइनस आर एल एन पी टू बाई माइनस आर एल एन पी टू बाई टी माइनस आर एल एन। सिर्फ फ्लो हो रहा है उसका, उसका टेम्परेचर कोई चेंज नहीं होगा, आइडियल गैस नहीं होगा। फिर प्रेशर ड्रॉप गिवन है दैट इज 10% ऑफ प्रेशर ड्रॉप फ्रॉम इनलेट टू द एक्सिट ऑफ द insulated pipe में कोई हीट ट्रांसफर नहीं है, कोई टेम्परेचर आपका इनमें सिर्फ फ्लो हो रहा है। लाइक इन द फ्लो दैट इज यू कैन सिंपली यूज माइनस आर एल एन पी टू बाई इवन दैट इज सिंपली इन द फ्लो थ्रू द, अगर किसी पाइप में फ्लो हो रहा है दैट इज आर एल एन पी टू बाई। नाउ व्हाट इज माइनस आर
लेकिन हमें यहाँ पे मास भी गिवन है, मास को भी यूज कर लेंगे, दैट इज एल। व्हाट इज P2 आपको गिवन है, दैट इज 10% ड्रॉप, दैट मीन्स P2 इज 0.9 गिवन। 10% ड्रॉप जो बच गया दैट इज 0.9, तो सॉल्व कर लें, दैट इज 3 इंटू 0.287 Ln। एक माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है एंड दैट वी कैन सॉल्व, एंड दैट विल कम अराउंड समथिंग, then quickly calculate this। ओके, आप क्विकली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट विल कम अराउंड समथिंग अराउंड 27 किलोवाट। नियरेस्ट आंसर है इसमें, दैट विल कम समथिंग अराउंड 27, नियरेस्ट आंसर 26। इरिवर्सिबिलिटी क्वेश्चन है, लेकिन अपन एंट्रोपी फाइंड करना था। इरिवर्सिबिलिटी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जब हम अवेलेबिलिटी पढ़ेंगे। ओके, विल फाइंड इरिवर्सिबिलिटी। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, तो जल्दी सॉल्व करेंगे। We have 2 minutes to solve this question. You have to tell whether this process is isothermal, reversible isothermal, irreversible या फिर irreversible only या फिर isothermal at the same, that is same, same. Entropy of surrounding decreases from 80 kilojoule per Kelvin to 75 kilojoule per Kelvin. The process also process that has been. Okay, let us check प्रोसेस रिवर्सिबल है या रिवर्सिबल है, कैसे पता चलेगा आपको, मैंने आपको बताया था कि ds यूनिवर्स should be greater than or equal to, that is should be greater than or equal to 0, right? ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, जो आप, that means ds system plus ds surrounding can never be negative, never be less than 0। तो हम देखते हैं कि हमारा जो सिस्टम है, एंट्रोपी ds सिस्टम कितना है, ds सिस्टम आपसे कहा गया है 0.3 किलो जूल एंड 0.4, और 100 kg मास टोटल है, दैट इज 100 S2 minus S1 0.4 minus 0.3 plus what is ds, तो हम फाइंड कर रहे हैं ds जो हमारा ds यूनिवर्स है वो है कितना, दिस इज एंड 75 minus 80 initial minus, sorry 5 minus initial, and that is 10 minus 5, that is 5, and that is greater than 0. Yes, universe is greater than 0, that means process is reversible. Process is greater than 0, that means, sorry, not, so the process is
अगर ये जीरो होता तो प्रोसेस रिवर्सिबल होता, दिस इज ग्रेटर देन जीरो, दैट मींस प्रोसेस इज रिवर्सिबल. So this is next row. Okay, you have another 2 minutes to solve this question. One second, this is similar question to the first one. That is, we have to find irreversible. T naught, T has, T naught, dot, Ts. Okay. Similar question, you can quickly find the answer. Okay, you can quickly find. Similar question is हमने पहले फाइंड किया था. Here, delta S is minus R and R L P2 by. From here you will find MRLL P2 by P1. Right, you can find the change in entropy. Taking then you can find irreversibility. Multiplying T naught Ts. Once again, this is insulated. Ts surrounding once again here will be 0. That will be equal to T naught. Simply T naught decimal system and you find the answer, that will be your 42.6. 42.6. Answer will be 42.62. That will be our सिमिलर क्वेश्चन था जैसे हमने पहला वाला किया था. तो
Okay, again you have 2 minutes to solve this question. Then I will give you the solution. A liquid of heat capacity 5 joule per Kelvin in an insulated container is heated electrically from 300 Kelvin to 600 Kelvin. If Ln2 is Ln2 given, Ln2 is 0.693, the entropy generation of the universe. Entropy generation of the universe. Entropy generation of the universe. Right. Entropy generation of the universe will. What is the entropy generation of the universe? That is ds universe is ds system plus ds surrounding. Now once again this is insulated container, that means ds surrounding is 0 and that will be ds system and that is, what is ds system? This is a finite body, a liquid, and this is a finite body, and what is that? MCLN TF by TI. TLN TF by is MCLN given heat capacity given CLN TF by, what is C, that is 5 and N 600 by 600 by 5 into LN2. LN2 is given as 5 or 6 0.693, that will come out as 3.4. 4 point, or 3.365. This is our answer. Okay, एक लिक्विड था, जो भी लिक्विड है, this liquid will act as फाइनाइट बॉडी. फाइनाइट बॉडी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था. फाइनाइट बॉडी वो बॉडीज होती है जिनका अगर आप हीट ट्रांसफर करेंगे तो आपका जो टेम्परेचर है दैट विल चेंज. एट टेम्परेचर विल चेंज ऑन द हीट ट्रांसफर. तो ds एंट्रोपिक जनरेशन ऑफ द यूनिवर्स फाइंड करना था, दैट इज सिस्टम प्लस सराउंडिंग बोथ. Entropy change for the surrounding will be zero because the container is insulated. Container is insulated, that means there is no heat transfer to the surrounding. अगर surrounding को कोई heat transfer नहीं है, surrounding की entropy में कोई change, like there will not be any change, right, on the entropy of the surrounding. So, okay, for this. Simple surrounding दोनों अपने find कर लिया. That is June 1. Next one. Okay. You have 2 minutes to solve this question also. Then I will give you the solution.
You quickly give me the answer for this question, and then I will. Then we will proceed further. Carnot engine operates between 37 degrees Celsius and 347 degrees Celsius. High temperature, low temperature given, and produces 620 kilojoule of work. The entropy change during the heat addition. Okay, you have 30 more seconds to solve this question. There is a heat engine. It is at higher temperature T1 347 degrees Celsius. 273 आप ऐड कर लेंगे, that will be 7, that is 200 500, that is 73 plus 47, that is 20, right? This is 620. This is 620. There is a heat engine, and the lower temperature T2 is 37, right? 37 to 73 plus 37, that is T1, T10. Now this is heat addition Q1, this is heat rejection Q2, and this is work done, and this is given as 620 kilo. This is given as 620. Alright, ये कंडीशन आपको गिवन है और आपसे पूछा गया है that what is the entropy change during the heat addition. Q1 आपने ऐड किया है at temperature T1, वो है आपका entropy change. Since this is a reservoir, entropy कितना होगा? That is Q1 by T1, because उसका temperature T1 always constant, that is not changing, that means Q1 by T1. अब अगर वो Q1 by T1 है तो पहले आपको Q1 चाहिए, जैसे ही आपको Q1 मिल जाएगा you will find the entropy change Q1. Entropy change here that we have to find is Q1 by T1, right? T1 हमें पता है 620 केल्विन, we need Q1. अब Q1 कैसे मिलेगा? W equals to Q1 minus Q2, and that is given as 620. Right? W is given as 620 kilojoule. Work done is given as 6. Now, thermodynamic temperature is there. Now, thermodynamic. और ये कॉर्नट इंजन है, दैट मीन्स रिवर्सिबल. दिस इंजन इज रिवर्सिबल. हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल, राइट? thermodynamic temperature scale, that is Q1 by T1 equals to Q2 by T2. That means Q1 equals to T1 by T2 into Q2. What is T1? T1 is 620 and T2 is 310. Q2, that is 2 times 2. Alright. Now, let's call equation 1 कह लिया, तो from equation 1, 2Q2 minus Q2 equals to 620. That means Q2 equals to 620. 620 Q2. Then what will be the Q1? 2 times this, that is 1240. So Q1 will be 1240. आपको Q2 मिल गया 1240 किलो जूल. What will be the change in entropy? 1240 by 620, that is 2. 2 kilojoule per. The right answer is 2 kilojoule per. There is no. The right answer 2 kilojoule per. 2 kilojoule per. Okay. So this is our. Let's move towards the next problem. Now we have two statements.
ऑप्शन आपके पास ए बी सी डी, जो आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो ऑप्शन आप देखते हैं, ऑप्शन ए बोथ स्टेटमेंट्स करेक्ट एंड statement 2 is correct explanation of the statement 1. Option B, both statements correct, but statement 2 is not correct explanation of statement 1. Option C, statement 1 is correct, 2 is wrong. Option D, 2 is correct, 1 is wrong. This is our option. The type नहीं किया यहाँ पे. That is the common in all the engineering success problems. So here we have. You have two statements. आपको बताना है कि इसमें से कौन सा statement correct है. What is statement 1? Energy of an isolated system is constant. Statement 2, entropy of an isolated system can increase but cannot decrease. Correct. Let us see what is the first statement. Energy of an isolated system. अगर कोई isolated system है, what is isolated system? By definition, what is isolated system? What is isolated system? No mass transfer, no energy transfer. Right. From the first law of thermodynamics, del Q equals to du या फिर dE. Del Q equals to dE plus del. एनर्जी इंटरेक्शन, थर्मोडायनेमिक्स में जो एनर्जी इंटरेक्शन है वो दो टाइप्स होता है, या तो हीट ट्रांसफर, राइट, या तो वर्क ट्रांसफर. थर्मोडायनेमिक्स में दो ही टाइप के एनर्जी इंटरेक्शन होते हैं, हीट ट्रांसफर, दूसरा वर्क ट्रांसफर. अगर ये दोनों जीरो है तो डीई इज जीरो, और ये दोनों जीरो है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, तो डी इज जीरो, दैट मीन्स ई टू इक्वल्स टू. तो जो एनर्जी है, एनर्जी फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके, नाउ एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन इंक्रीज. What is entropy? Del Q by greater equal to del Q by. अगर आइसोलेटेड सिस्टम है del Q is zero, that means ds is greater than or equal to, right. जो एंट्रोपी चेंज है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो एंट्रोपी चेंज है वो या तो जीरो होगा या जीरो से ज्यादा होगा. कैन नॉट डिक्रीज, राइट. यूनिवर्स और आइसोलेटेड सिस्टम है उसकी जो एंट्रोपी चेंज है वो नेगेटिव नहीं हो सकती. Change means final minus initial. Final entropy in initial से कम है, that will be negative. Final entropy initial entropy से कम नहीं हो सकती. जो entropy change है that cannot be negative. Yes is greater. Yes isolated system is greater. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, राइट. ऑप्शन है बी. स्टेटमेंट 2 इज नॉट explanation for statement. करेक्ट दोनों है, राइट, बट जो स्टेटमेंट 2 है वो पहले वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए आप कहेंगे दैट इज ऑप्शन बी. ऑप्शन ए इज बोथ स्टेटमेंट करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. नेक्स्ट. फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स हैं. अगर आपने किसी हीट ट्रांसफर या इफेक्ट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी, ओके, दो बॉडीज हैं आपके पास. ए, दिस इज ए, दिस इज ए एंड, दो बॉडीज हैं ए एंड टी इज ग्रेटर देन टी. तो यहाँ से आपका ऑफकोर्स हीट ट्रांसफर होगा फ्रॉम
A2. The heat will be transferred from A2. Okay? This will be our heat transfer. आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे कौन कौन से स्टेटमेंट वैलिड है. एनर्जी इज कंजर्व, एंट्रोपी इज नॉट कंजर्व, अवेलेबिलिटी इज नॉट कंजर्व. ओके, इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, दैट वी हैव टू डिस्कस, दैट वी हैव टू. सिंपल क्वेश्चन है. स्टेटमेंट वन क्या है? एनर्जी इज कंजर्व. एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, राइट. व्हाई एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व? दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मास कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन किसी भी सिस्टम में अप्लाई कर सकते हैं. एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, दैट इज फर्स्ट. एंट्रोपी इज नॉट कंजर्व. व्हाई? बिकॉज जो हीट ट्रांसफर कर रहे हैं आप बॉडी ए से बॉडी टू तक, मैंने आपको बताया है इस चीज को. जो भी हीटिंग प्रोसेस है या हीटिंग या कूलिंग प्रोसेस होता है, दैट इज इरिवर्सिबल. अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो देयर विल बी एंट्रोपी जनरेशन. इरिवर्सिबल प्रोसेस है, irreversible process है, there will be entropy generation, right. entropy generation. इसका मतलब जो एंट्रोपी पहले थी, जो एंट्रोपी बाद में है, वो सेम नहीं होगी. दैट इज एंट्रोपी इज नॉट कंजर्व, देयर इज एंट्रोपी जनरेशन, राइट. दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट करें, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो. नो, अवेलेबिलिटी इज नॉट कंजर्व. इसको हम कल देखेंगे इस स्टेटमेंट को कि अगर आप सेम अमाउंट ऑफ हीट और आपके पास हायर टेम्परेचर पे है, वही हीट आपके पास लो टेम्परेचर पे है, तो उसकी जो वर्क करने की कैपेसिटी होती है वो चेंज हो जाती है, राइट. तो टेम्परेचर के साथ साथ हीट तो आपके पास है, लेकिन उसकी वर्क करने की कैपेसिटी कम हो जाती है विद द टेम्परेचर. ठीक, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. करेक्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इज अवेलेबिलिटी इज नॉट कंजर्व. So all these three statements are, there will be availability, there will be availability loss, there will be availability. This is not. Next one. Okay, you have four statements. You can quickly read these statements and tell which statement is correct. Which of these statements are? Another statement है, the entropy of system reaches its minimum value when it is in the state of equilibrium with its surrounding. Second statement, entropy is conserved in all reversible processes. Third, entropy of a substance is least in solid phase. Entropy of solid solution is not zero at absolute zero. इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है, दैट यू हैव टू. ओके, पहला स्टेटमेंट देखते हैं. एंट्रोपी ऑफ सिस्टम रीचेज इट्स मिनिमम वैल्यू, राइट. दैट इज नॉट करेक्ट. दिस रीचेज एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू. एंट्रोपी या फिर जिसकी रैंडमनेस है वो मैक्सिमम होती है जब कोई भी सिस्टम अपने सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में है. उस केस में जो एंट्रोपी है दैट इज मैक्सिमम, दैट वी प्लस इट्सेल्फ. Entropy is conserved in all reversible processes. That is correct. Yes, universe is zero at for reversible process. This statement is correct. Entropy of a substance is least in solid phase. So, what is entropy? Entropy is simply uh, measure of randomness. जो सॉलिड फेज में होगा उसमें जो मॉलिक्यूल्स की जो रैंडमनेस है
वो सॉलिड फेज में कम होगी इन कंपैरिजन विद लिक्विड एंड गैस। दैट मींस सॉलिड फेज का एंट्रोपी नहीं होगा। सॉलिड सॉल्यूशन की एंट्रोपी जीरो नहीं होती, दैट इज करेक्ट। जो परफेक्ट क्रिस्टलाइन होते हैं उसका जो जीरो डिग्री से एब्सोल्यूट जब दैट इज जीरो डिग्री केल्विन में उनकी जो एंट्रोपी होती है वो जीरो। अदर सॉलिड्स के लिए सॉलिड सोल्यूशन है तो उसमें कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, वो एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। दैट मींस ऑप्शन इज दैट मींस द ऑप्शन इज दैट मींस द ऑप्शन इज the entropy of universe tends to remains constant. The maximum attains a certain finite यूनिवर्स के एंट्रोपी के साथ क्या होता है दैट इज सिंपल क्वेश्चन है, कई बार देख चुके हैं, आज के लेक्चर में भी देख चुके हैं इसको। नीड टू आंसर दिस रियल क्विक। यूनिवर्स हमने देखा दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है राइट, दैट ट्राइज टू बी मैक्सिमम राइट, क्योंकि रिवर्सिबिलिटी होती है सिस्टम में और जब भी प्रोसेस होगा दैट विल ट्राई टू टेंड्स टू बी मैक्सिमम। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी, दैट इज tends to be maximum. The universe entropy that tends to be maximum. So that tends to be right. There are this is again there we have two statements. Okay, we have two statements, statement one and statement two. और आपको बताना है कौन कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, ऑप्शन ए बी सी डी। आपको पता है ऑप्शन ए बोथ स्टेटमेंट्स करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू is correct explanation of statement one. Option B both statement correct but two is not the explanation of one. One is correct, two is wrong. Option C. Option D is one is correct, sorry, one is wrong, two is। इस चीज को भी मैंने क्लास में डिस्कस किया था कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड हीट, इस सिमिलैरिटी अगर आपने देखा जाए तो आप ये कहते हैं कि वर्क ये भी आपका पाथ फंक्शन है, ये भी पाथ फंक्शन है, बोथ आर पाथ फंक्शंस। ओके, बोथ आर पाथ फंक्शन, ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी नहीं होगी, नॉट प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स। ये भी आपका प्रॉपर्टी नहीं होगा, नॉट प्रॉपर्टी। तो वर्क और हीट में सिमिलरिटी बहुत है राइट, नॉट प्रॉपर्टी। बोथ आर एनर्जी इन ट्रांजिट, एनर्जी इन ट्रांजिट, बोथ आर एनर्जी इन वर्क भी एंड हीट, वर्क एंड हीट को। both past function though both not property, energy in transit, okay, inexact difference, these are inexact। ये सारी चीजें थी, सिमिलरिटी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी सिमिलरिटीज थी जो हमने देख लिया था। तो एक तो हमने स्टेटमेंट टू करेक्ट होकर दिया एनर्जी इन ट्रांजिट, ये हमने देखा था वर्क एंड हीट और बाउंड्री फिनोमेना। जो भी आपने सिस्टम लिया है राइट, आप ये देखते हैं कि सिस्टम की बाउंड्री कहाँ है और इस बाउंड्री को क्या क्रॉस कर रहा है। अगर इस बाउंड्री को थर्मल एनर्जी क्रॉस कर रही है तो आप कहते हैं कि हीट ट्रांसफर हो रहा है। अगर थर्मल एनर्जी के अलावा कोई एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो आप कहते हैं कि वर्क ट्रांसफर राइट। लेकिन इस बाउंड्री को क्रॉस करना चाहिए, दैट इज बाउंड्री फिनोमेना, दैट इज एनर्जी ट्रांजिट। ओके, तो एक तो ये कर्व आप कंफर्म होगा दैट इज एनर्जी ट्रांजिट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ मैंने आपको डिफरेंस बताया वर्क और हीट में। जो हीट है, हीट इज लो ग्रेड एनर्जी, जो डिफरेंस थे, एंड वर्क इज हाई ग्रेड एनर्जी। एक तो डिफरेंस ये था लो ग्रेड एनर्जी एंड हाई ग्रेड एनर्जी, और एक डिफरेंस मैंने आपको ये बताया था कि विथ हीट ट्रांसफर, with heat transfer there is entropy transfer, entropy transfer।
विथ हीट ट्रांसफर देयर इज एंट्रोपी ट्रांसफर, लेकिन वर्क के साथ कोई एंट्रोपी ट्रांसफर, नो एंट्रोपी, with work there is no entropy. ओके, तो एक डिफरेंस ये है, जो काम आप वर्क से कर सकते हैं वही काम आप हीट से कर सकते हैं। वर्क और हीट में बहुत सारी और भी सिमिलरिटीज है। डिफरेंस क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्क और हीट में क्या डिफरेंस है, तो आप कह देंगे दैट इज वर्क इज हाई ग्रेड एनर्जी, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, और हीट इज लो ग्रेड एनर्जी, दैट इज डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ। नाउ विथ हीट ट्रांसफर देयर इज एंट्रोपी ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर देयर इज नो। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सॉरी दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। So one is wrong, two is correct. That is option is. ये तो अभी हमने डिस्कस किया था। When system reaches to a state of equilibrium, the following property assumes maximum. That is entropy. जब भी सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में होगा, जो आपकी एंट्रोपी होगी दैट विल अटेन मैक्सिमम वैल्यू। ये मैंने इसका क्लास में दिया था, इसको हमने डिस्कस किया था। वॉच द लेक्चर दैट इज अवेलेबल। थ्रॉटलिंग प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए। What happens in a throttling process? What happens in a throttling? What is throttling process? That is flow through a very small opening, like pores, like ball. Flow through a very small opening is called throttling. और throttling की characteristics मैंने आपको बताई थी। What are the characteristics of throttling? Throttling की characteristics होती है, वो क्या क्या होती है मैंने आपको बताया था। No heat transfer, no heat transfer, no work transfer, no work transfer, right? Highly irreversible process. Throttling is highly irreversible. And isenthalpic process also, that is relevant here but later. ये कैरेक्टरिस्टिक जब भी आपको थ्रॉटलिंग प्रोसेस कहा जाए, दैट इज फ्लो थ्रू अ वेरी स्मॉल ओपनिंग। न्यूमेरिकल्स में कई बार इसकी जरूरत पड़ जाती है। कई बार आपको थ्रॉटलिंग क्या होता है, इसकी जरूरत न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में पड़ जाती है, जब आपको ये देखना पड़ता है कि वहाँ पे हीट ट्रांसफर है या नहीं है, वर्क ट्रांसफर है या नहीं है, वहाँ पे ये सब कुछ मेंशन नहीं होगा, वहाँ पे सिर्फ वर्ड मेंशन होता है, दैट इज थ्रॉटलिंग। ओके, ऐसे क्वेश्चंस मैंने कराए थे, जो क्लासरूम में डिस्कस किया था, वहाँ पे मैंने ऐसे प्रॉब्लम कराए थे। Okay, now it is an adiabatic process. Of course, it is an adiabatic process because there is no heat transfer. This statement is correct. There is no work transfer in the process. That is the characteristic itself. That is uh, also correct. Now, what is happening with the entropy? Now, let us see. Entropy is del Q by T for irreversible process, right? Plus delta S generation. Plus delta S generation. Now, there is plus delta S generation. अब कोई हीट ट्रांसफर नहीं है, तो दिस मीन्स दिस पार्ट विल बी जीरो, क्योंकि डेल क्यू इज जीरो, कोई हीट ट्रांसफर नहीं है। तो व्हाट इज डेल्टा एस जनरेशन? डेल्टा एस जनरेशन क्या होगा? ठीक, नाउ व्हाट इज द डेल्टा एस जनरेशन? डेल्टा एस जनरेशन, दैट आई हैव टोल्ड यू, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। दैट मीन्स चाहे कितनी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहे कितनी हो, लेकिन वो पॉजिटिव होगा, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, नॉट जस्ट पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। दिस टर्म कैन नॉट बी जीरो। तभी हमने क्लास में डिस्कशन किया था इन सारी चीजों का, मेरी क्लास थी आपकी। दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ओके, so that means ds is greater than ds is greater than zero, that is entropy. This statement is also correct. 1 2 3 is 1 2 3 is increase in entropy of the system represents increase in available energy, no. Increase in temperature, no. Decrease in pressure, no.
डिग्रेडेशन ऑफ, अगर आपकी एंट्रोपी बढ़ गई तो दैट मीन्स कि जो आपकी एनर्जी है उसका जो डिग्रेडेशन है दैट इज एनर्जी। मैं आपको टीएस डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, ऐसे समझ लेंगे कि सपोज जो टीएस डायग्राम होता है, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, ये जो एरिया अंडर द कर्व है, दिस एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स हीट। सपोज ये रिप्रेजेंट करता है 100 किलो जूल ऑफ हीट। अब 100 किलो जूल हीट आपको लोअर टेम्परेचर पे अगर बनाना है, दिस इज सपोज 100 किलो जूल आप यहाँ पे सप्लाई, यहाँ पे भी हमने 100 किलो जूल ही सप्लाई किया, 100 किलो जूल हीट हमने अप्लाई किया है। चलो इस पार्ट को हम कल बेहतर एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारा तो जो पहले वाले की एंट्रोपी है, दिस इज डेल्टा एस वन एंड दिस इज डेल्टा, यहाँ पे भी 100 किलो जूल हीट आपने, दिस इज टेम्परेचर टी वन, दिस इज टेम्परेचर। अगर आपने एंट्रोपी बढ़ा दी है, इंक्रीज एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, वही वही हीट अगर कम टेम्परेचर पे है, दैट मींस जो एंट्रोपी है दैट इज हायर, तो लोअर टेम्परेचर पे दैट मींस टेम्परेचर है दैट इज हायर, सॉरी जो एंट्रोपी है दैट इज हायर। ओके, तो इसका मतलब कि अब उसके पास वर्क करने की कैपेसिटी, दिस एनर्जी हैज लेस वर्क, लेस वर्क कैपेसिटी, दैट इज डिग्रेडेशन ऑफ। इसको हम कल डिटेल में देखेंगे, इन डिटेल वी विल सी दिस इन डिटेल इन द नेक्स्ट लेक्चर, जब हम अवेलेबिलिटी पढ़ रहे हैं, जब अवेलेबिलिटी पढ़ रहे होंगे वहाँ पे इस चीज़ को और बेहतर तरीके से समझेंगे। मैंने आपको ज़्यादा बस ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया आपको, क्लासरूम में हम ऑलरेडी इसको डिस्कस, क्लासरूम में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, फिर से एक बार कल रिविजन करेंगे तो वहाँ पे हम इसको नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अवेलेबिलिटी, वही चीज़ है जो मैंने अभी पिछला बताया आपको। इंक्रीज इन एंट्रोपी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम गिवन क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसफर एट लो टेम्परेचर। द चेंज इन एंट्रोपी में बी रिगार्डेड एज मेजर ऑफ रेट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ हीट transformation into work. Entropy represents maximum amount of work obtainable per degree drop in temperature low. This is segmentation. आपने अगर लोअर टेम्परेचर, लो टेम्परेचर इज हाई टेम्परेचर, जो इंक्रीज एंट्रोपी है उसको आप यहाँ से ऑब्टेन, इंक्रीज एंट्रोपी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इवन क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसफर। 100 किलो जूल दोनों केस में था, 100 किलो जूल पहले भी, 100 किलो जूल दूसरे केस में एट लो टेम्परेचर, तो आपको यहाँ से आंसर, दैट इज ऑप्शन नेक्स्ट। Which of the following situation the entropy change will be negative? Which one of the following situation the entropy change will be? Again, we have 1 minute to solve this question. Let me draw. Try to draw. This temperature entropy. Air expands isothermally, right? अगर isothermal है, इस point A, अगर 1 कह लिया, isothermally from इस point से expand करती है, that is from 6 bar to 3 bar. Expansion हो रहा है, right? Isothermal है, इसलिए increase the entropy. This A process A from 6 bar to 3 bar. Air is compressed to half the volume at constant pressure. जो constant pressure line है वो ऐसे जाएगी, this is half pressure. Heat is supplied to the air at constant volume till the pressure becomes 3/4. तो heat supply करेंगे, this constant pressure process, this is constant volume of process, heat supply किया है, उसकी जो entropy होगी that will increase. Air expands isentropically from 6 bar to 3 bar. अब कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, आइसेंट्रोपिकली है, इसकी जो एंट्रोपी होगी वो कांस्टेंट सी एंड दिस इज
आइसेंट्रोपिकली मीन्स एंट्रोपी कांस्टेंट। बाकी देख लिया, बाकी तीनों प्रोसेस आपकी जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज कर रही है। सिर्फ जहां पे आपने कंप्रेस किया है एट कांस्टेंट प्रेशर to half of its volume, the entropy increases. Like in that case only entropy is. तो आप इस ग्राफ से देख सकते हैं, TS डायग्राम से आप देख सकते हैं, दैट इज ऑप्शन is. You can see from the graph that option is correct. Here is, these are the constant pressure lines. ये है आपका 6 बार और ये है आपका 3 बार। 6 बार से 3 बार तक आपने एक्सपेंड कर दिया है। आपका एक्सपेंशन दो प्रेशर लाइन हमने ड्रॉ कर लेगा, 6 बार है, आइडिया लग जाएगा आपको। ओके, so I hope you got the point and okay, thank you very much for the joining. I hope you got all the points and understood. तो कल हम जो स्टार्ट करेंगे, tomorrow onwards we will start availability का रिवीजन करेंगे and then we'll solve some problems also. Then we'll go to the last topic, that is pure substances. Okay, so I hope you got all these points and please subscribe to this channel and also get your plus subscription on Unacademy. Use this referral code. This referral code. Use this referral code Ravi PY is your referral code. Ravi PY to get 10% discount in your total annual fees. जो भी टोटल आपकी टोटल सब्सक्रिप्शन फीस, सॉरी टोटल सब्सक्रिप्शन फीस में 10% का डिस्काउंट। आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, प्लस या फिर आइकॉनिक, जो भी आपको सुटेबल लगता है, बट यू शुड गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बिकॉज देयर यू विल गेट personal coach, right? Personal coach, personal guidance. There you will get पर्सनल गाइडेंस, राइट। और जहाँ किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जो आपका पर्सनल गाइडेंस अगर आपको मिल जाता है, तो दैट विल हेल्प यू इन सिक्योरिंग better rank. Not just selection, you will also be going for better rank. Okay, so you should go for iconic subscription, right? And 2 years iconic subscription, that will be better for you, right? थोड़ी स्टडी कर सकते हैं आप, प्रैक्टिस करेंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, बहुत सारे टेस्ट सीरीज मिलेंगी, आपको स्टडी मटेरियल मिलेंगे। आप सबको पता है कि किसी भी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की, किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए, किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, दैट इज टू पार्टिसिपेट इन द टेस्ट सीरीज, राइट? टू पार्टिसिपेट इन द टेस्ट सीरीज वो आपको मिलेगी, और आपको रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए हमेशा स्टडी मटेरियल की जरूरत है, और वो स्टडी मटेरियल आपको तब मिलेंगे जब आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए। Okay, so I hope you got the point, and thank you very much. Thanks for the joining in.